Hi, Vikram. I have to tell you right at the outset Hi, that hi, we're how are all wearing you? white to honor you, huh? By the way, This is for you, Vikram. in your For honor, me? we're all wearing white. We're all wearing This is for white you. today for you. Oh, no, this is like a light pink, let me just tell you that. Oh no, let's Okay, change. but we're so used to seeing you in white that we thought we'll all wear white for you. Welcome, guys. Welcome. It's so nice to have you all. I'm going to start with a quick introduction, and I'm going to start with our very special guest this evening, Mr. Vikram Bhatt. He's a director, a producer, a screenwriter, an actor, and very few people know that he's also a voice artist. Am I correct, Vikram? Absolutely. My first love. Wow, that is Secret the love. connection between the three of you today, and that's what's common amongst all of us today. Moving on to the beautiful lady Mona Shetty. Mona, we've swapped places today. You should have been here, and I should have been there. I I'm hope I'm happy. half. I'm happy to be answering and not asking today for a change. Now, what do I say about Mona? She's the most amazing female leading voices in our country. She's a voice coach, she's a voice casting director, a dubbing director, and president of Sound and Vision India. Thank you. Thank you Welcome, so Mona. much. So Thank nice you. to have you, and it's such an honor to have this conversation with you today. It's so lovely to be in such august company. And It's last but December. not the least, it's December, Viraj is saying. Oh gosh. Oh gosh. Okay. And last but not the least, my favorite person in this industry, Viraj Adhav. He's the best male voice we have in our country. And I've been admiring him since I was a little girl, and he knows that. I used to leave notes for him in scripts, in films that we've done together. In And quality he's studio in Quality Studio. That's where the journey for me began. for And everyone. Everyone. and also Viraj is an actor, right, Viraj? Mhm. Okay. If you say so. Okay. If you say so. Okay, we say so. So today we are going to talk about voices behind famous faces. But I would like to rephrase it a little bit because I think we should say famous voices behind famous faces because look at who we have today. We have Mona, we have Vikram, we have Viraj. I mean, we have the top of the industry right here. So it should be famous voices behind famous faces, right? If you say And I so. Thank would. you. That's sweet. Modesty. We are trying not to answer that. We're trying to be modest. that- So I would like each of you to say a little bit about yourselves because I don't want to introduce and say more. I would like you guys to speak to the audience and let them hear a little bit about your journey. Vikram, let's start with you as you're our guest of honor today. I know you started your journey at a very young age. So please tell our audience something about your journey. I started dubbing really young. My uncle used to make Gujarati films. Okay. And those were the days, where you used to have dubbing in a system called the loop system, where Right. the picture would play again and again. And if you went wrong, you have to wait for it to come back. Uh, and I used to love it. I used to love doing the sync and remember the assistant director was praising me. I don't think I got paid for it, but it was fun. Then I think the journey started with Kasoor because we had cast Aftab, who looked the role but didn't sound it. Right. He was much younger in those days. So I dubbed for Aftab and then I dubbed for Dino in Raz. And then I dubbed for Imran Hashmi in Footpath. And then, Wow. uh, gosh, I've dubbed for so many people. I don't think they want me to say this right The now. list is endless. The list is endless. Quite a few. As a matter of fact, once or twice I got even asked to by other producers. They are मेरे लिए dub करते हैं. Uh, And did you do that?
Yeah, I remember my friend Bablu Pachisia had made a film. It had Tushar Kapoor and Aisha and I don't know what I was dubbing for. But I think they are a new boy. And then once again, Sunil Darshan recently called me for his son's film and said, "Yeah, वो उसकी dubbing कर ले यार." I think it was so bad with names. I can't remember. And he was very upset with me. But yeah, so I've done most of it. But I think the crowning glory has been the audio film project that I've just finished doing. 106 episodes for Red FM. Wow, amazing. I So saw the hoardings and I was so impressed and I felt, yeah, oh wow, this all that dubbing has finally come to. come together. So Yeah. it's become India's number one podcast in terms of fiction, Wow. and it's doing well. So the storyteller has finally got his own voice. Ah. Yay, that's Vikram, are you amazing. using two devices right now? Sorry? Are you using two devices right now? No, I barely Oh, have one. no, we were getting a little feedback, so I was just trying to make sure. Um, So, Mona, ठीक you है. tell me something about yourself. Let the audience know because everyone sees Mona Shetty now, but nobody knows what your journey has been because you, Viraj, Vikram, and I would say that for myself, we all started when we were really young. And nobody knows Yeah. the struggles we've gone through. And I would want you to share that with our audience today. और Yeah, हमें and बोला I जाए think more than anything, I think it's important for people to know our struggles because everybody seems to think we made it overnight. And absolutely everybody wants to be famous straight away. And right. they don't realize that everybody has gone through the whole journey and the whole rigmarole and everything, like right from doing crowd dubbing to, I mean, I think my journey in the film industry started because my mom used to do all the Hollywood dubs at Aradhna, and I was already doing voiceovers since I was a child. I was doing ad films and radio spots. And I think Mukesh ji's production controller used to be, there all the time because Shakira. Shakida. Chakida used to Shakida. be there all the time. And all your films, all of Mukesh ji's films used to be dubbed at Aradhna. So one day he just asked me that, Acha, will you just audition for this role? And it was for Rani in Ghulam. And that's how the whole movie journey started. I mean, after that film became a hit, Mukesh ji thought I was lucky for him and then kept on asking me to dub for quite a few of his films. And I used to think that's scary because I was like, जब flop हो जाएगा ना, ये lucky भी चला जाएगा. As a matter of fact, I remember that so well because I'm going to tell a story about Mona that not many people know. So I was a director of Gulam, incidentally, and I saw this girl with braces come in. If you remember, to have braces at that. Oh my God, I had braces This too. little girl. Okay, I don't think she wants to be remembered for that, but I was like, she's going to dub for my main lead, this little girl. But there was a lot of performance in that voice right from get go. So braces, no braces, it was very good. I Thank remember you. And Amar then, calling me up and saying, "अरे Haji? यार वो I remember Amar calling me up and saying, अरे यार वो रानी की डबिंग वो ठीक हो रही है कि क्या हो रहा है?" मैंने बोला यार आवाज तो अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है, सिंह चलो शुक्र है, दो रानी has still not forgiven me for it. I know she hasn't forgiven anyone for it. I keep reading the But interviews. now when she meets me, she's like, "विक्की तूने मेरी आवाज डब कर दी." I said, "यार रानी, तू कोई फटे हॉर्न की तरह साउंड करती थी इन दिनों में यार, मैं क्या करूं?"
नहीं, एक्चुअली दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विक्रम के उन दिनों ना इतना एक्सेप्टेंस क्यों नहीं था इन आवाजों का जो आज है. मतलब आज कोई इफ somebody comes with a slightly different than conventional voice, आज उसको कोई डब करने भागेगा नहीं. If there's performance and everything else that goes with it, today it may not be dubbed, right? What were the considerations in those days for dubbing? I think उन दिनों में भी ऐसा कुछ नहीं था, but it was just that one is launching a new girl, Hmm. and one doesn't want. One thought that okay, what if this doesn't sound too feminine? Right. What if it takes away from the whole sexuality of the sensuality of the girl? So it's really odd that Malavika, I'm here with Viraj and Mona, who dubbed most of my films. So I know I don't that's know. why. I don't know if I'm here as in the capacity of a voice artist or a director who's worked with them. It sounds like a cross Both. between the both. It's a mixed Viraj has bag dubbed today. so much for me. विक्रम, आपको याद है मैंने आपकी कौन सी फिल्म फर्स्ट डब की है? हाँ, मैं इसी पे आने वाली थी. 1920 विराज, आपने, ये आपको लग रहा है 1920? प्लीज बताइए. उसके पहले शायद जॉन भी किया था आपने. जॉन तो बाद में हुआ. एतबार में. मेरी पहली फिल्म आपके साथ थी एज अ क्राउड आर्टिस्ट. इट वाज गुलाम. Oh, More power to you, क्या बात कर रहे हैं? Viraj. It was गुलाम. लो बात. तो मेरी भी शुरुआत about these films much before John and much before 1920 with you was incidentals and crowd in Ghulam. Thank you लो for बात. saying मतलब that, दोनों ही Viraj. गुलाम की. यही तो आप हमें आते ऑडियंस थे. को बताना है कि हाँ, हम आप सब ने विक्रम आते थे, देखते थे. फिर एक दो बार ऐसा हुआ था कि विक्रम ने कहा कि आप इस कैरेक्टर की आवाज इससे करवाइए, उससे करवाइए. एंड देन इंसिडेंटली या क्राउड के लिए विक्रम होते नहीं थे वहां पर, लेकिन आई वाज अ पार्ट ऑफ गुलाम्स क्राउड एंड इंसिडेंटल्स. वाह विराज, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ एक एक लाइन जर्नी. बोलकर कहीं निकल गया, एक एक लाइन बोलकर कहीं निकल गया. And it's so nice to know that, Viraj, even for the newcomers today, that we've all been there, done that. It's Yes. not, Right. there's no Yes. there's Shame. dignity to everything, and there's Yes. there's a Yeah. learning curve that all of Yeah. us have to go through. ये Right. सबको Yes. जानना बहुत जरूरी है. ये तो पहले क्राउड Absolutely. वॉइसेस बुलाया करते थे, अब एम्बियंट voices. नहीं, अब भी Yes. क्राउड ही कहते हैं. अब भी हाँ. क्राउड ही कहते हैं क्योंकि इट इज Crowd क्राउड. कहते हैं, ambient वैसे voices बहुत कहते बहुत सारी हैं, फिल्में ऐसी हैं incidentals जिसमें कहते हमने. हैं. ट्रू. ट्रू. अभी कहने से क्या होगा, जो है सो वो तो वही है. विक्रम, बॉक्सिंग रिंग में गुलाम मैं ही हूँ वो. ओ टाइगर टाइगर. बॉक्सिंग रिंग का रेफरी मैं ही था. यो याद है मुझे. वो माइक ऊपर से आता था. अरे बाप रे, सारी पुरानी यादें. यादें जो होती है ना, वो एक कंप्यूटर फाइल की तरह होती है. ट्रू. आप उसे ढूंढते रहते हैं, फिर जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो पूरा फाइल डाउनलोड हो जाता है. Yeah, seriously. And for me, this was such an exciting experience. Like, one day Vikram is directing me, one day kabhi kabhi Amir bhi aa jate the, and I'm dubbing for Rani, and Ghulam was a big talked about film, and you guys were like the big deal to be working with. And it was so exciting for me as a first film to be doing that. It was amazing. And I remember, I don't know if you remember, Vikram, that scene jahan pe wo he climbs up the window and she's screaming, looking at him. हाँ, हाँ, मैं चिल्लाई जा रही I हूँ remember that. और पीछे से विक्रम बोल रहा है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है यार, एनर्जी नहीं आ रहा है, इट्स नॉट, आई एम नॉट गेटिंग द फील. आई सेड, अब ना यू कम इनसाइड एंड प्लीज सिट नेक्स्ट टू मी, बिकॉज ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, And he sat next to me and he almost jumped out of his chair when I screamed, because he realized I was really screaming like So crazy. blame it on the sound recordist. Yeah. So I mean, I remember that experience, and it was quite funny because when you came in, it was like it was a whole different experience for you. Yeah. I Okay, so remember that. I remember. I'm sorry, I'm going to ask you guys that how does it feel to be the voice, famous voice behind a famous face? I mean, Actually, what?
If I may interrupt, we missed out on Viraj's story. सॉरी, मेरी स्टोरी यही है जो मैंने कही थी। शुरुआत मेरी गुलाम बात से मेरी पहले हुई थी, लेकिन हिंदी फिल्म्स में जो मेरी एंट्री थी वाज विद गुलाम। उससे पहले कई सारी फिल्में भी की थी, यही क्राउड आर्टिस्ट, इंसिडेंटल्स, और उसके एक्चुअली कमिंग टू योर क्वेश्चन ना मालविका, फेमस या फेमस वॉइसेस एंड फेमस फेसेस, राइट एक्चुअली उस वक्त कुछ पता नहीं था कि कौन फेमस है और कौन नहीं है। Yeah. फेमस फेसेस वो बाद में फेमस हुए। हमारे लिए भी जो एंट्री पॉइंट उस वक्त जो कहा जाता था एंट्री पॉइंट है, तो पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है, इस फिल्म के बाद होने क्या वाला है। सही वो बात डब है। कर लिया, और जैसे मोना ने कहा, आराधना में हम लोग इतनी सारी फिल्में डब करते थे, इतनी सारी फिल्में डब करते थे। देन देयर यूज्ड टू बी ऑडिशंस, ऑल द भट्ट्स यूज्ड टू बी देयर। तो एंड इट वाज सो नाइस दैट दे एक्चुअली took on this talent, all the talents that we have, everybody who's dubbed for them, all the films. तो इतनी अच्छी बात थी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी हैं इतने लोगों को। और उस They वक्त give ये us नहीं a पता था lot कि of ये, opportunity. यस, और ये नहीं पता था कि वो फेमस फेसेस हैं। वो फेमस, आई मीन राइट नथिंग अगेंस्ट देम और नथिंग अंडरमाइनिंग देम, बट ये था कि वो फेमस फेसेस बाद में बने। तो एक फिल्म जब आपके हाथ में है और उसके बाद आप आपको, लोगों की वजह से बनी। इसीलिए तो मैंने कहा फेमस वॉइसेस बिहाइंड फेमस फेसेस। तो वो आपकी वॉइसेस आवाज, बाद में फेमस I हुए। would say, नो the thing is, Malavika, if I may say this, that जब मैं राज की शूटिंग करता था तो डीनो तो खैर अंग्रेज है बेचारा, एटलीस्ट वो टाइम पे तो था। तो मुझे लगा यार इसका मैं शायद ओके करूँ कैसे, क्योंकि अगर जिस तरह ये बोल रहा है उस तरह मैं ओके करूंगा तो कभी ओके होगा ही नहीं शॉट। तो मैं वो जो मॉनिटर था, डायरेक्टर्स मॉनिटर, उसका वॉल्यूम ऑफ करके उसके साथ थोड़ा बहुत डब करके ओके करता था शॉट, हाँ ये हो जाएगा। जी Oh, wow. So, what I want to say to anybody or everybody who's watching this is that acting is difficult, but acting for someone who's already acted is even more difficult. is even ट्रू, more आई difficult. एग्री। Yeah. Lot of Right. limitations. It's like, fitting a square in a circle. Right. आपके पास उतना ही गैप है, उतना ही पॉज है, आप आउट सिंक नहीं हो सकते, आपको सिंक में भी करना है मगर आपको परफॉर्म भी करना है, आपको एक्टिंग भी करनी है, एक्टिंग को एनहांस भी करना है। सो आई थिंक इट इज अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया, एंड आई बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी underrated art. Yeah. It is. It's an art form. I think voices are an art form, and they're not treated as an art form. They're treated as dubbing artists, ट्रू। which is Right. unfair because It is. अब हमने जो नाम बोलते चेंज हैं कर दिया है, voice artists, Voice actors. Voice actors. actors हैं हम। voice actors. जी हाँ, ये भी ठीक है। विक्रम, आपने अभी ये बात Voice कही actors. कि डबिंग फॉर समवन इट्स रियली डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर समवन हु इज एन एक्टर. सो कमिंग टू दैट, आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस दैट हाउ डिफिकल्ट इज इट टू डब हिंदी टू हिंदी इन एन ओरिजिनल फिल्म. आप प्लीज बताइए कि कितना मुश्किल है हम हिंदी टू हिंदी जब डब करते हैं एज एन आर्टिस्ट. See, मेरे लिए तो क्या था कि समवेयर इन द मिडल ऑफ द फिल्म ही मैंने सोच लिया था कि इसको तो डब करना पड़ेगा बॉस। जी तो आई वाज ऑन द सेट एंड आई हैड द रूम टू मैनूवर स्लाइटली, ये डबिंग में ठीक कैसे करूं मैं। तो एक रीटेक लेता था या बोलता था यहाँ पॉज कर ले, ताकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बाद में करवा लूंगा। जी जी The real talent is these two people because they don't have that. राइट They don't have they don't have the added advantage of being on this set and controlling it even to a slight extent, but Right. controlling it. So I think Right. the question should be answered by these by two. Viraj and Mona. Yeah. पता है मुझे, They don't have the या advantage. मुझे हमेशा से लगा है हिंदी टू हिंदी डबिंग इज वेरी डिफिकल्ट। Exactly. अब थोड़ी ये डबिंग्स कम हो रही हैं, लेकिन इफ यू लाइक विक्रम सेड, फिटिंग अ स्क्वायर इन अ सर्कल, तो जो एक्टर है उसकी स्टाइल क्या है, या उसने कितना मुंह खोला है, या
किस स्पेस से उसने डायलॉग को बोला है, तो उस सब में आपको अपनी कारीगरी दिखानी है। ये मुंह खोलने वाली बात पे मुझे याद आई, विराज तुम कल मुझे कुछ दिखा रहे थे कि मैं हाँ, वो बताता हूँ, नाम करके नहीं दिखा दो बोलूंगी, प्लीज। एक्टर कैसे बोलता था और तुम्हें कैसे डब करना था, ये जरा प्लीज ये जरा प्लीज, हाँ। मैं बताता हूँ विक्रम, आई वोंट नेम द एक्टर, Aww, maybe you that's might so guess it. No, fun. not fair That's to so name, not fun. fair to name, Come not fair on. to name. नहीं, नहीं, मैं not fair. बताता हूँ। What is तो it? ये प्रॉब्लम, ये मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर कहीं डायलॉग है, देखो आज मालविका, विक्रम, मोना यहाँ आए हैं, तुम नहीं आए, क्या हुआ, प्रॉब्लम है? देखो आज मालविका, विक्रम, मोना आए, तुम, कोई प्रॉब्लम? इसमें आपको फिट करना है इस डायलॉग को। द एक्टर हैज स्पोकन इन दिस वे, And you have to इसको fit हमको that फिट line. करना है। तो यूज्ड टू बी सो डिफिकल्ट। तो आपको सिर्फ लिपसिंक में ये दिखाई दे रहा है, क्या हुआ, विक्रम, मोना, मालविका, कोई क्या करेगा? तो फिर पीछे से आवाज आती थी रूम से, डबिंग रूम से, कुछ कर लो यार। इसीलिए तो विराज और मोना को बुलाया जाता है। That's when you guys are called. एंड No, but अदरवाइज That's what I mean. That यार उसने तो ऐसा बोला है, अब क्या करेंगे? यही होता but था, I या think तो the कोई challenge for us कास्ट है। is that we used to be so used to कि हमको परफॉर्म करना है, हमको डब करना है, वो एक एक्साइटमेंट वैसे भी वॉइस एक्टर के लिए रहता है कि you're dubbing for the lead actor in the film, but at the same time like Viraj said, you have to figure out how they speak, what is Right. their pitch and tone, what is their voice like, what is their cadence, what is their style of dialogue delivery, and what is suiting their body language, उसका lip sync, मतलब हमारे लिए कभी कभी तो ये बहुत ही ट्रिकी हो जाता था कि आपको ना ये परफॉर्मेंस सुधारना है, सुधारना है, लेकिन अलग नहीं लगना चाहिए, सेम एकदम ब्लेंड होना चाहिए, ये ना दिस इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस कि आप कितना यस, एंड सुधार सकते हो विदाउट लुकिंग लाइक यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ दैट Right. फेस आपकी और दैट एक्टिंग बॉडी। एबिलिटीज चैलेंज होती हैं इसमें, यू हैव टू बी एन एक्टर बिहाइंड द माइक्रोफोन एनीवेज। तो ये Right. एक होता Oh ही है yeah. आपकी If you're not an आप actor, see कभी that is कभी what happens. वॉइस Sorry. कुछ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी वॉइस से, तो मेरे ख्याल से वो वॉइस को साइड में रख के करेक्ट। अपनी परफॉर्मेंस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आवाज ठीक ही आ जाती है। और एक बार मोना से सीखी थी मैंने, नम्रता को भी देखा था ये करते हुए, विदाउट हेडफोन्स डबिंग करते थे ये लोग, विदाउट हेडफोन्स। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो मैंने मोना को कई बार देखा था विदाउट हेडफोन्स डब करती थी, तो मैंने कोशिश की उसी तरह से। और पहले काफी सारा वर्बोस होता था, डायलॉग्स बहुत लंबे छोटे डायलॉग्स होते थे पहले फिल्म्स में, तो मैंने वो कोशिश की, एंड इट टुक मी सम टाइम टू एक्चुअली गेट इनटू द रिदम, बट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द परफॉर्मेंस आल्सो। आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो होती है विदाउट द हेडफोन्स, एक बार आपने सीन को देख लिया, वो कितना भी बड़ा सीन हो, कितना लंबा सीन हो, बहुत ज्यादा लाइंस है उसमें, लेकिन आपकी यही मैंने कहा, एक्टिंग एबिलिटीज वहां आ जाती हैं इन पिक्चर, और फिर उसके बाद आप जब डब करते हो विदाउट द हेडफोन्स, वो एक डिफरेंट रिजल्ट ले आता है सामने। Right. Right. तो मेरे ख्याल से हर किसी ने, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस थोड़ी आजकल कम हो गई है, लेकिन अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, किसी अगर के इस पास पर प्रैक्टिस पेशेंस नहीं है आज ये करने की। नहीं, बट विराज प्रैक्टिस करना, आई एग्री, हमें अपना काम रियाज करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक नॉन एक्ट, मतलब यू आर वॉइसिंग फॉर समवन, पर वो एक्टिंग में इतने बेहतरीन नहीं है, या जो भी है, आवाज अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको बुलाया जाता है, या मोना को बुलाया जाता है, या विक्रम, या मुझे, या एनी अदर आर्टिस्ट, उनके पॉजेज मैच करना, जब उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी से नहीं की गई है, उनके पॉजेस गलत हैं, जब वी विल रीड अ लाइन, वी विल से इट इन अ सर्टेन वे, वी नो वेयर वी हैव टू मार्क द पॉज, we know where we have to put an exclamation, we know where we have to put a full stop. It is really hard to match It that, is. and It's yeah, very it's difficult. it's it's And it's like, the biggest problem was most of the films I've dubbed was उस actress की पहली film, तो they were not experienced, they were yeah, not, very often I think Vikram, they were not trained also, right, for acting पहली film में। और सी, और ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, ये एक्चुअली वॉइस एक्टर्स को भी ना
See, I think voice actors are divided in two kinds, if I may say. Some voice actors are not actors. They are. I think they are more like radio jockeys, where there is no performance. और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपको यहाँ से जाना चाहिए और बस इसके बाद कभी यहाँ बताइएगा। ये क्या है ना? हम्म, तो ये दिस इज रेडियो, दिस इज नॉट फिल्म। बस फॉर लॉट ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस आर्टिस्ट डोंट एक्ट, they don't perform. Majority of them are not. Whereas, that's why yeah, I said you voice guys expression. are a few of the people who perform and act. And I think, you know, I'm not very keen into the scene of voice actors, but probably, there should be a training ground for them, or somebody should be training these people because, I think we are heading into a world where voice acting will become very important, especially with the whole metaverse and with everything going into virtual reality. And you know there's going to be lots of animation coming on that we haven't seen. Right. Animation is getting cheaper, and for animation you need voiceover artists, the voice artists for that. But even for sync sound, actors need to be good at their dialogue delivery now. True. Yeah. वो तो अभी क्या है कि हाँ बैंड बजती हैं, बट वैसे डायलॉग्स है नहीं and आजकल, अगर देखा जाए but देयर आर they नो don't get बिग cast. डायलॉग. Because of that a lot of people don't get cast, जो हिंदी Yeah. भाषी नहीं होते या जो ठीक से बोल, unless of course you are playing that kind of a character. Hmm. If you are if you are playing a character who's not well versed with Hindi or something, then it works. बम्बैया Right. ऐसा। लेकिन अगर टिपिकल लखनऊ की फिल्म है या ऐसी कोई फिल्म है तो मरे, Right. फिर तो आप सिंग साउंड नहीं कर सकते। बिल्कुल But नहीं कर सकते. Malu, Vikram has hit upon a very, very important point here. कि voice artist Voice दो तरीके training. नहीं, voice artist दो तरीके के होते हैं. जी. एक जो अपने voice को बेचते हैं, जी. that is their voice is their gold mine, right? Right. And they are Right. called for their voice and for their voice quality and what they do with it. Okay, Right. वो एक तरीके की voice artist है. Right. एक और है जो कि अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, वॉइस के लिए शायद जाने जाते होंगे, बट मोर सो फॉर देयर परफॉर्मेंस, Performances. क्योंकि Right. वो they can break that barrier of only being a voice and go beyond that to fit into a character and to Right. be able to blend with the body language and the face and the mood of the style of that character, to be able to lend itself to that character and not With break not away just their from it. voice. Yeah. With their हाँ, इसमें performance. इसमें आई वांट टू जस्ट कम इन, ये एक्चुअली अब ज्यादा है. बैक इन द डे ये ज्यादा नहीं हुआ करता था, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस भी जैसे हुआ करती थी विक्रम, देयर यूज्ड टू बी सेंसर डब्स, देयर यूज्ड टू बी सेंसर Right. डब्स. तो हम लोग एक्टर्स के हाँ, लिए डब किया करते थे. एक्टर्स कोई भी हो, वो सनी देओल हो या अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, so we had to dub the entire film The for entire them, film. for the Yes. censors, to pass. बट And फिर and मैं आपको ये बात बताऊं कि फ्रॉम अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम अ वॉइस एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम्स एक्टर नीड्स टू बी डब, और हमको सैंपल्स आते हैं फ्रॉम जी. from somebody like a Mona who is a dubbing director. So she sends you 4 samples, 5 samples, और उसमें से आधे तो ऐसे होते हैं जो आवाज अच्छी होती है मगर एक्टिंग होती नहीं। होती बिल्कुल नहीं है. वो I think, let me put it this way, I think there should be a difference between voice artists and voice over artists. correct. Voice over and voice is very different. वो जो वॉइस ओवर करते हैं ना, वो उसके लिए ठीक है, Correct. डॉक्यूमेंट्रीज में वॉइस ओवर होती है, ये होती है, वो होती है, उसके लिए ठीक है कि आपका एक बैरिटोन है और आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं और इतना इमोशन लाने की जरूरत नहीं है आपको।
लेकिन and I'm sure Mona and Malvika, you and Viraj, you guys Viraj. uh, have to do some voice casting also very often, and and I'm sure you guys find it difficult sometimes to cast a whole film. पर हाँ विक्रम आप हमेशा कहते भी थे बैक इन द डे, यूज्ड टू ऑलवेज से कि डबिंग वाला टोन नहीं चाहिए मुझे इसमें, ना सिर्फ हाँ मुझे, और भी लोगों को जब आप डायरेक्ट करते थे तब आप ये कहते, जो वॉइस एक्टर्स हुआ करते थे उस वक्त, तो आप हमेशा कहते थे मुझे डबिंग वाला टोन नहीं चाहिए, आई वांट अ परफॉर्मेंस, आई वांट अ हाँ, परफॉर्मेंस क्योंकि वो you can make out, the audience can also make out. Audience doesn't understand what is wrong, but they राइट know this is wrong. दिस इज सिंग रॉन्ग। सॉन्ग लगता है वो। हाँ, उनको लगता है कि यार ये क्यों ऐसा बोल रहा है यार, इसको क्या जी हो गया है? मतलब ये जैसे अमीन सानी साहब हुआ करते थे, वैसा एक्टर कौन बोलता है? करेक्ट, सही बात है। दैट्स फॉर द That is the ब्रॉडकास्ट। problem, and I think you are the president of the association. Perhaps you should have a school like Anupam Kher's Art, where you, because the time has come for all of us to share what we know. oh Yeah, of course Vikram, talking about voice training, I would like to know that what is the importance of voice training today? Because आजकल के जो artists हैं, the newer generation, they aspire to get success overnight, which is not possible. We all know that because we've been here many years. I don't want to say how many years. Like Mona, you said we are all dinosaurs in this profession now, but it is a step by step process, and the newer generation needs to understand that they need to go through certain exercises. जैसे हम लोग, I've done theatre, तो मैं voice exercises किया करती थी. So what is the importance of voice training for the newer artists who've come in now, maybe few years, 5 years? What would you like to say to them? So I How would like to important say is what voice training? Mona and Viraj said, that see, per se I'm not a dubbing artist, or let's say a voiceover actress. I'm a director who also does the voice. I'm yes not जी professionally this. जी Uh, but I also, you won't believe I can't read, and I have to learn the line. learn the lines. absolutely ये ट्रू, बहुत जरूरी है दिस And इज लाइक दैट विदाउट हेडफोन्स वाला डबिंग जैसा ये ये भी विदाउट है Dubbing हेडफोन्स, वाला. विदाउट हेडफोन्स में यही and करना पड़ता Mona, है। I have to do it without headphone. ट्रू, या I have to learn the line and do it without headphone, Headphone. and then I can do it. अगर मैं पढ़ने को गया ना, तो मेरी लाइन मिस हो जाती है, full confusion. क्योंकि uh, I'm a little slow also because I'm not regular. कभी कभार करता हूँ, साल में एक बार करता हूँ या 2 साल में एक बार करता हूँ. So I'm not that efficient. Uh, But like guys or Viraj. I mean, I've seen them dub full scenes at one shot, and I'm like, oh my god, how could they do this? Uh, वो but भी एक I हुनर think है. I'm sorry, you were saying, to Vikram? answer your question, Malvika, for a new person, it should be a rule: say it without reading and dub it without headphone. Wow. ट्रू, Mona, what would you like to Can say do about that. voice training? दैट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस। Yeah. नहीं ये दो चीजें जो विक्रम ने कही ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ नंबर ऑफ रीजन सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई हैव यू बीन कॉल्ड देयर टू डब इज इट दैट द आर्टिस्ट वाज नॉट अवेलेबल या ऐसा है कि हमको कुछ सुधारना है उस आर्टिस्ट के डायलॉग डिलीवरी में अगर आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है तो भले आप हेडफोन पहन के सुन के आप कीजिए देयर इज नो प्रॉब्लम ओके लेकिन उसमें क्या होता है आप कान में सुन रहे हैं और जब आप बोल रहे हैं ह्यूमन टेंडेंसी will be to speak above what you're hearing. So automatically your pitch goes up, your volume goes up. Okay, so the performance changes without you realizing. आपको लग रहा है कि मैं तो सेम ही कर रही हूँ जो मैं सुन रही हूँ लेकिन एक्चुअली आप सेम नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ compete कर रहे हैं और compete करने के चक्कर में आपका पिच ऊपर चला गया आपका वॉल्यूम ऊपर चला गया और विक्रम के साथ ही हो चुका है कि मैं पूरा रास डब करने के बाद ही said मोना वी नीड टू टॉक एंड वी नीड टू टॉक कि तुम बहुत बचकानी लग रही हो इस फिल्म में हमको थोड़ा सा तुमको मैच्योरिटी लाना पड़ेगा इस परफॉर्मेंस में ये नहीं चलेगा सो आई रिमेम्बर डबिंग रीडबिंग द होल फिल्म अगेन विद विक्रम इन द रूम बिकॉज वो नहीं आ रहा था यू नो एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट दैट नहीं ये मैं हेडफोन सुन के नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे पहली बात तो अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए
and also I have to feel like I'm doing the performance for the person I'm seeing on screen, so I'm emulating every action and every performance and saying the dialogue with a certain amount of spontaneity and not listening and True, following. true. एंड Right. वो पढ़ने से क्या होता है, कई बार रीडिंग भी लगता है, सो यू आर नॉट ओनिंग द लाइंस, Right. you know. So Another thing that happens is that when you use the headphone, yeah, another human tendency is to imitate. yes, True. absolutely. So Yes. you Try to you do the get same very thing. influenced, you get Yes. influenced by what you're hearing. तो सडनली जो इम्प्रूव करने वाले थे उसके बजाय आप इमिटेट करने लगे उसको, क्योंकि कान में उसकी आवाज आ रही है। और ये लोग तो आई थिंक विराज यू टॉक विद द हेडफोन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। No, without the headphones. अच्छा The Hindi films without the headphones. Always, Viraj, always ओके without the headphones? Not in the initial stages. पर Okay. बाद में, like I said, when I saw Mona, without the headphones, मैंने सोचा ये क्या, इससे क्या फर्क पड़ता होगा। तो मैंने Right. जब ट्राई किया, उसके बाद Hmm. में I started dubbing without the headphones. So now So you don't what use. Vikram said कि you have to learn those lines. Right. और लंबे चौड़े डायलॉग्स होते थे, तो ये सेंसर डब हो या कोई रेगुलर डब हो, उसके वो डब करते वक्त विदाउट हेडफोन करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है उसमें, बहुत फर्क पड़ता है। Right. रीडिंग क्वालिटी और सेइंग क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। Yeah, आप कितना भी आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, इफ यू आर रीडिंग it will somewhere sound like you're reading. Like a reading. Right. Unless you are Amitabh Bachchan and you can read and dub your own voice, then but that's another standard. True. 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 And he's dubbing his own voice, so you know half the battle is there won. is something that after that is one. He knows his pauses, he knows Yeah. his Right. sound, so he has to just. Uh, Uh, but as a director, I have to say this. I don't know if this is the program, but I have to say that I have dubbed with the Who's Who. I have never seen anyone dubbing like that. That's true. True. That's I true. agree. मुझे याद The है एतबार की dubbing के inflections, the वक्त ऐसा ही हुआ inflections था। he can bring into his performance. Smallest things Yeah. there. Yeah. You know what he did during Agnipath? I was an assistant director. And I must tell you this story because it's interesting. When he sat down, Vijay Dinanath Chauhan, he used to move the way Yeah. he was moving in the film. वो रसलिंग आ रहा है, अब उनको कौन बोले? वो साउंड रिकॉर्ड बोला मैं तो नहीं बोलता, तो मैं हिम्मत करके गया, मैं बोला सर ये क्या वो माइक में ना ऐसा आप मूव कर रहे हैं तो रसलिंग आ रहा है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ। वैसे सर वो हम बाद में इफेक्ट में करते हैं तो नहीं आप लोग निकाल देते हैं उसको से, मुझे मेरा रसलिंग खुद का चाहिए। वो सो एफिशिएंट दैट ही न्यू कि ये जो इफेक्ट वाले रसलिंग करते हैं वो सारा मिक्सिंग में अल्टीमेटली सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर मेरे डब ट्रैक में होगा तो ये लोग क्या कर लेंगे। Wow. सो यू यूज्ड टू डू दैट आल्सो व्हाइल डबिंग। और पूरा पूरा सीन अग्निपथ में तो उनके बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग थे। So actually there also I learned a lot of dubbing from him. True. Yeah, How it's amazing. to dub. And he dubbed एक the बार film मैंने twice. विक्रम से कहा, सॉरी, एक बार मैंने विक्रम से कहा आज नहीं आता हूँ, आज डब नहीं करता हूँ, मेरी आवाज एकदम फटी हुई है। विक्रम ने कहा यही चाहिए मुझे आज। मुझे समझ नहीं आई ये बात, ये जब तक मैं वहां गया स्टूडियो में, तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों कह रहे हैं यार, मेरी आवाज फटी हुई है, मुझे यही चाहिए आज। उनको पता भी नहीं कि किस हद तक क्या हुआ है, but the way it worked, so a director's vision when it's there, even in the smallest things, बहुत फर्क पड़ता है उससे। Yeah. बहुत फर्क डायरेक्टर्स विजन से बहुत फर्क पड़ता है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर्स डबिंग में क्यों नहीं आते हैं, बिकॉज आप बहुत कम आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर या आप साउंड इंजीनियर के विजन से करोगे, दैट्स अ डिफरेंट विजन, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, बट दैट्स अ डिफरेंट विजन, इट्स नॉट द डायरेक्टर्स विजन। But I'll tell you क्यों नहीं आते, I'll tell you मोना क्यों नहीं आते। हाँ, टाइम अभी नहीं है, मैं एक डायरेक्टर के हैसियत से बोलता हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं, पेशेंस नहीं है।
हम लोग को ना we have to go through the emotion of the scene when we shoot it. First we sit with the writer and we go through it. Hmm. फिर वो आर्टिस्ट को समझाना पड़ता है सेट पे, और कभी कभार तो एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है. Hmm. इट्स a huge emotional investment. Yes. एंड देन अपने को लगता है यार अभी इसको जब करना है तो आई हैव टू गो थ्रू इट अगेन. पता है यार अभी नहीं होगा यार, मेरे से किसी और को भेज दो. But So I that's the don't know fun what other directors, product, but Vikram. no, I mean, later you understand that it's your job and you have to go. And I always attend my dubs. Yeah. Yeah. Yes, I've been lucky to So, have Vikram in all my dubs. yeah, no, it's very important. See, if I am Very. changing that, if I am asking Viraj or Mona or Malavika to dub a lead performer of mine, then I'm asking them to act. If an actor is acting and if the director is not there, whether it is sound or whether it is picture, acting is acting. Right. Yeah. You have to be there for that performance. Yeah. Unfortunately, Malavika, I had to rush. I had only till 6 o'clock actually. But this conversation was so interesting that I I couldn't leave. But I have to leave because uh, my wife is not too well, and All right. Oh, I'm sorry. so I have to go. Thank you for being here, Vikram. It was such a pleasure Thanks, Vikram. having a chat with you. Thank you so much for joining, Thank you. Vikram, and for accepting straight away when we invited you. I mean, you guys are part of my journey. How can I say no? Thank you. How nice Thank that is. you. And I remember a conversation, Vikram, once you had called me asking about some casting, and he said, यार मेरी ना इतनी आदत हो गई है तुम्हारे और विराज के साथ कि मेरे को ना समझ नहीं आता दूसरों को कैसे डायरेक्ट करूं, वॉइसेस को. एंड आई वाज लाइक, किसी और के साथ काम मत करो, सिर्फ हमारे साथ ही करो. I was so happy to hear that. You said तुम लोग जैसे समझते हो ना मुझे, मेरी बात को समझते हो, तुम लोग एकदम डायरेक्शन समझ लेते हो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. आई फील वेरी कंफर्टेबल. फिर मुझे किसी और के साथ वो मिलता नहीं है, वो ट्यूनिंग. एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर इट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीबडी You know, एल्स हु once or माइट नो. twice, I'm going to go with a very funny story. So when my daughter was assisting me, she knew that you are up for Rajneesh in 1920, Viraj, and Yes. and then we made Haunted, right? And I dubbed for me more in Haunted. But before I dubbed, so 1920 में Krishna had just joined the industry. Hmm. तो वो जाने भी तो यारों में नहीं है, वो एक एक्टर जो कहता रहता है सर गोली मार दूं. तो कृष्णा थोड़ी ऐसी थी कि यहाँ भी कोई एक्टर एक्टिंग नहीं करता तो बोलता है शुड आई कॉल विराज. विराज क्या बोल रही है, तो पिक्चर खत्म तो करने दो. So I mean, that is a compliment to you guys. Thank That's you. She hasn't met you. One more famous face that I've dubbed for is Vikram himself. Yes. I've ऐसा dubbed for क्यों? you, Vikram. बस ऐसा ऐसे क्यों? ऐसे. I think in Vashuji's film. No, the one which you are playing the lawyer. The show, I think, I don't recollect the name, where you had dubbed for the hero and I dubbed for you. Where I dubbed for the hero. You were the lawyer in that film. Ah, I know. I think it was a web series. Web series. It was a web series. That's right. Sorry, not a film. It was a web series. ये मेरे साथ भी हुआ है. So, When I was going to dub for Lisa in Kasoor, याद है? And you said, no, you're sounding yes, too young for this. You're sounding too childish. yes. So you got Divya to dub for Lisa and me to dub for Divya. Divya. And Divya was in the film. Divya was हाँ. in the film. And Divya said, यार अगर मैं लीसा की डबिंग करूंगा तो लीसा मेरी डबिंग कौन करेगा? अरे हम मोना कर लेगी यार, तो टेंशन मत ले. It was a strange combination. So I thank you guess for you're having used me. to this jugglery. I know. I'm going to rush, Okay. and I Thanks, wish you Vikram. all the best. Thank you so Vikram. much, Thank you for Vikram. being It was here. lovely Thank you. having you. Bye-bye. Thank you. Take care. Bye. Wow. So it's just Massage. us now. Just us. Now we can have all the fun.
We were having fun anyway, actually. We were having, Yeah. yeah, we were having. Yeah, it was very nice. It was very nice. All the anecdotes are so lovely. It's such a You know, this is yeah, such a beautiful trip down memory lane, because this true. was such a major part of my life, and it's such a Same here. major part of who I am today, that True. So I true. Same can here. never forget it. Sometimes I do get very bored of having to give the same interviews over and over again and talking about the same films and the same actresses over and over again, because at the end of the day मेरी जिंदगी में तो वो finite है ना, वो अब तक खत्म हो चुका है अभी. So Right. I have to You talk know, about कहीं the ना कहीं same. हम लोग कहीं ना कहीं काफी लकी हैं, क्योंकि people like Vikram या भट्ट साहब himself, they have directed us in the studio. In the Yes. studio. स्टूडियो True. में आकर उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है कि Mona and me have been in the same studio, she on one side, me on the other side, भट्ट साहब in between explaining the entire scene, और उसके बाद उनके सामने हम लोग डब कर रहे हैं. He's there और हम सामने डब कर रहे हैं. तो वी बिन लकी. और उस जमाने में ये भी होता था, जैसे विक्रम ने अभी बच्चन साहब के बारे में कहा कि द वे ही डब्स. एतबार के वक्त मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम डब करते वक्त देखा. इट्स अ ह्यूज लर्निंग, इट्स अ ग्रेट लर्निंग. Yeah. जिस तरह से वी हैव बीन लकी इन दैट एस्पेक्ट कि अब तो काफी प्राइवेसी हो गई है चीजों में. He Yeah. completely emulates the body language on screen. ट्रू. Yes. Yes. उसको पूरा सा उसको मतलब अब्सॉर्ब कर लेते हैं पूरी तरीके से. और यही हम आजकल हमारी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, मतलब जो एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स हैं कि ये बैठ के स्क्रिप्ट पकड़ के डबिंग करना इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव. It बहुत is. खड़े रिस्ट्रिक्टेड. हो जाओ, स्क्रिप्ट को छोड़ दो स्टैंड पे, Stand by. हाथ पैर हिलाओ भाई. ट्रू. लर्न टू यूज द बॉडी लैंग्वेज, यूज योर ब्रीदिंग, यूज योर बॉडी, यूज योर एनर्जी. तब वन जाके कुछ होगा. One big director once was watching me dub, and the engineer was saying कि यही जैसे विक्रम ने कहा, रसलिंग साउंड आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. तो the engineer was saying कि आप बहुत मूव हो रहे हो वहां पर, तो बहुत साउंड आ रहा है. So the director said, get me a boom mic. He came inside the dubbing room, he held the mic and said, अब तुझे जो करना है कर. How So ये बहुत sweet. फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है इससे. बहुत हर कोई नहीं फर्क कर सकता है, हर डायरेक्टर नहीं करता ये विजन बहुत Doesn't कम have लोगों the confidence. Not every director will have the confidence to do this. ट्रू. और कौन Right. आएगा डबिंग रूम में आर्टिस्ट के साथ बूम माइक पकड़ के ऐसे खड़े होकर डब करवाना. बहुत फर्क पड़ता है उससे. लेकिन he said you want to move around, you want to say कर लो, जो करना है कर लो. और फिर उन्होंने कहा कि जो भी साउंड आ रहा है, रसलिंग साउंड, मूविंग साउंड, यू We'll मैनेज manage. Yeah. जो अब हमको नहीं ये देखा जाता है आजकल. You don't नहीं get देखा to जाता. see the directors so involved with the artist, and it's, I mean, I don't know. I'm glad that we got to experience it. ट्रू. And I think आजकल लीड एक्टर्स की डबिंग तो कम ही होती है ना. आई थिंक वो दौर थोड़ा खत्म सा हो गया, चला गया आजकल है. होती ही नहीं है. खत्म. हाँ, हाँ. बिकॉज तब डबिंग का जमाना था. अब तो सिंक साउंड का जमाना है, तो डबिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है उतनी. और डबिंग जैसा का कि जमाना विक्रम तो ने अब भी है, बताया. लेकिन प्रैक्टिस एंड तरीका थोड़ा अलग है. हाँ, Right. जैसा कि ये विक्रम ने बताया कि आजकल कास्टिंग भी वैसी होती है जैसे उनको कैरेक्टर चाहिए और जैसे सही है. डायलॉग डिलीवरी चाहिए, तो उतनी डबिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है. बिकॉज आजकल तो सिर्फ चेहरा देख के आई थिंक कास्टिंग होना है, वो Casting बंद हो हो गया है. जाती है. हाँ. सो आई थिंक नो, आई एम सेइंग कि वो बंद हो गया है कुछ हद तक. आई फील के थोड़े बेटर, अनलेस यू आर अ परफॉर्मर, वो इतनी आसानी से रोल शायद नहीं मिलेगी आज. Stakes are also much higher, I think, probably. Much higher, yeah. I wanted to ask you both, does social media validation really matter for brand positioning and value today? What do you think? Because I know Viraj has a very different thought process on that. He's I don't know, Mona, you want to take the question first? It's directed at you, Viraj. इसका जवाब तो मैं भी सुनना चाहती हूँ. पता नहीं, मैं सोशल मीडिया पर हूँ नहीं. तुम्हारा जवाब मैं सुनना कहीं चाहती नहीं हूँ. है मैं अपना आप जवाब कहीं. इसके बाद दूंगी. मुझे आज फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया, seeing the post of our session, and said, ये विराज किस प्लेनेट पे रहते हैं, उन सर को बोलिए, आई एम अ वेरी हूँ बिग ना, फैन. यहाँ इंडिया वॉइस फेस्ट पर हूँ ना. But they don't know where to contact you or message you. They don't know. I'm going to send you a screenshot of that message. Do that. Where are you, Viraj? बोलो विराज, जवाब Anywhere? दो.
इसका जवाब Can I जनता think and come चाहती back? है. Can I think and come back in the next session? No, The, no, no, the nation no. wants to know कि पता नहीं विराज यार, मेरे कहाँ पास गायब जवाब नहीं रहता है. है, क्यों सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देता. जनता को जवाब चाहिए विराज. जनता को जवाब चाहिए. Malu, I think the social media नहीं बोलना. reach is immense. It is undeniable. हाँ, Yes, विराज yes. इतना ज्यादा सोच रहा है तो मैं बोल ही देती हूँ. तब तक तुम तो सोच लो अपना आंसर, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम. हाँ, तब तक मैं बोल लेती हूँ. मैं तो, मुझे तो वैसे भी वर्बल डायरिया है, मैं बोल देती हूँ. तो मुझे लगता है कि इट इज सोशल मीडिया की पहुंच तो डेफिनेटली इट्स अनडिनाएबल. जो लोग आपको जानते नहीं, या जो लोग आपके शहर में नहीं रहते, या जिन लोगों ने शायद पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स देखे नहीं होंगे, उनको पता चलता है कि आपने क्या काम किया है. तो ये लोगों को बताने का एक जरिया है, बिकॉज अभी तक हमको हर काम में क्रेडिट तो नहीं मिलता है एज अ वॉइस एक्टर. You're right, कोई नहीं कोई काम मिलता में है. मिलता है. अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ कुछ हाँ, जगह काफी पे. चीजें बदली भी हैं. But हाँ, तो कुछ लोग आजकल क्रेडिट देते हैं. जैसे मुझे याद है, probably Rockstar was one of the first films where I got a credit as the voice actor in the film, but जितनी फिल्मों की बात हम आज कर रहे हैं, उतनी फिल्मों में क्यों, सारी फिल्मों में, जितनी फिल्मों में मैंने काम किया है, मुझे बताया गया कि प्लीज इसके बारे में बात नहीं करना. बात मत करिए. हाँ, बात नहीं कर. True. बताना नहीं मेरा है. बोला ये जाता था कि आप फंक्शन में मत आइए, क्योंकि वहाँ प्रेस होगी और प्रेस अगर पूछेगी तो आप मत आइए फंक्शन में. कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए फिर. हाँ, तो मेरा ये पॉलिसी था कि हाँ, जब तक फिल्म थिएटर में है, मैं इसको कोई हार्म नहीं होने दूंगी. तो मैं नहीं चाहती कि कुछ पेपर वेपर में आ जाए, या मैगजीन में आ जाए, कोई फिल्म पे आ जाए, या कोई एक्ट्रेस पे आ जाए. मैं नहीं चाहती थी, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं चाहती थी. लेकिन इस बात का क्या कि मुझे अपना काम छुपाना पड़ रहा है. मैं अपने काम के बारे में बात नहीं कर सकती. मैं किसी को बता नहीं सकती बता अपने नहीं काम के सकती. बारे में. कितना खराब लगता है कि कोई कुछ अप्रिशिएट कर रहा है और मैं कह नहीं सकती कि अरे वो मैं ये हूँ, मैंने किया है. राइट, वो मैंने मैंने किया किया है. है. तो तब बहुत बुरा लगता था. तो आई थिंक सोशल मीडिया से वो थोड़ा बहुत, अभी जो रिकग्निशन हमको आज मिल रहा है, वो शायद उस वक्त नहीं मिलता था. बहुत कम लोग जानते थे कि हम डब करते हैं इतने बड़ी बड़ी फिल्मों में. और जिन एक्टर्स के लिए हम डब करते हैं, वो आगे जाके इतने फेमस हो चुके हैं. फिर पता चलता है, अच्छा पहली फिल्म में तुमने किया था, अरे बाप रे वो तो बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी, या अरे बाप रे वो तो परफॉर्मेंस मुझे इतना याद है. और हाँ, मुझे लगता था पहली फिल्म में आवाज अलग क्यों लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन तब पता नहीं चला था. तो सोशल मीडिया की रीच इज अनडिनाएबल. जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हमारे दोस्त जो बहुत एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी पहुंच कहाँ तक चली गई है. किसी किसी के 40,000 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हैं, जो लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे. तो ये जो चीजें हैं, ये अवेयरनेस जो बढ़ा सकता है, दैट इज अनडिनाएबल. वो एक तरफ की बात है. रही विराज की बात, और जो हम लोग जो काम कर चुके हैं, nobody can take that away from us, right? हम वो काम कर चुके हैं. हाँ, थोड़ा बहुत उस चीज का अवेयरनेस है. किसी ने हमारे विकिपीडिया पेजेस बना लिए हैं इस जानकारी पे. हाँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन भी रहता है. मैं आज देख रही थी हमारी फिल्में कि हमने कितनी फिल्में एक साथ की हैं, तो उसमें दिख रहा था कि कुछ फिल्में उसमें गलत भी लिखी हुई हैं. लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, हम इंटरव्यूज देते हैं, हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस है थोड़ा बहुत, तो उससे लोगों को आजकल पता चलता है, अच्छा ये काम करते थे. और लेकिन आज की जनरेशन, आई मीन जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ये फिल्में तो आज की जनरेशन ने देखा ही नहीं होगा. देखी ही नहीं है. हाँ, जानते ही नहीं है. शायद आप देख लें. अब देख लेंगे अगर अवेलेबल हो तो कहीं. तो So सब I जगह think available. that you need to be on social media, not because you need to promote yourself, but because you need to be accessible to some extent. And there are fans who want to know about the work you're doing, who want to know कि विराज आगे क्या कर रहा विराज है. क्या कर रहा है? विराज भाई, आपके फैंस मुझे मैसेज कर रहे हैं, बताइए आप क्यों नहीं है सोशल मालू मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म पे? मैनेजर बना लो.
हम Done. बेस्ट. मालू पैकेज डील भी कर लेगी, अच्छा हीरोइन के लिए नहीं, मैं हीरो भी ले आती हूँ और हीरोइन भी ले आती हूँ. So Viraj, what do you have to say about that? I'll see you soon. No, ये क्या बात हुई? On सवाल का on जवाब देना social media. पड़ेगा. हाँ, ये जवाब बोलो यार ना, होता तो कंप्लीट करो सेंटेंस. I'll see you soon on social media. I'll see सबको you soon, सबको Mona. बहुत इंतजार है। मैं जब मैजिक आवर करती थी एंड सबको अपने फ्रेंड्स को सबको बुलाती थी और सब लोग बोलते थे विराज क्यों नहीं आते हैं, विराज ने मना निनाद किया क्यों नहीं था. आते, निनाद भी बहुत भागता है इन चीजों से, निनाद क्यों नहीं आ रहा है। विराज So, ने you मना किया था. मना किया, मना किया, हाँ, गलत मना बात किया। विराज. मैं इस बहुत बात को गलत कभी बात. नहीं भूलूंगी विराज, बहुत गलत बात. That's why I came to इस meet you बात को yesterday. कभी नहीं भूलूंगी मैं, Okay. कभी नहीं भूलूंगी। Acting abilities. दर्द इतना दुख पहुंचा है मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ विराज। You should start doing magic hours again and get Viraj. I will. Yeah. जब विराज हाँ बोलेगा तब मेरे मैजिक आवर्स शुरू होंगे। नहीं, अब विराज ने ऑनलाइन हाँ बोल दिया है. Now there's no backing out. Now he बोला can't है, back मैंने out. नहीं सुना। I said I'll see you soon on social media. अच्छा ठीक है, That's your Okay. hint, Mona. ठीक है। Okay, I want to ask you guys one more thing. That give me your opinion about voice acting as an art form vis-a-vis physical acting. You know, it's a lot of physical in voice. Like I said, आजकल हम लोग इतने used to हो गए हैं ना, like Mona said, Restrict. बैट डबिंग करो, restricted, हाँ, script सामने right. है, Right. आप अपनी बॉडी को यूज नहीं कर रहे हो, Hmm. करते होंगे लोग, आई डोंट नो हु डज इट, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पर हैं काफी लोग हैं जो ऐसे करते हैं रेस्ट्रिक्ट होकर, लेकिन काफी लोग हैं जो बिल्कुल खुलकर डब करते खुलकर हैं। डब करते हैं. सो आपकी एक्टिंग एबिलिटीज तो आनी ही है उसमें, नो डाउट अबाउट। Right. So we're going to have a last thing, a little fun thing that we've got prepared. We'll do like a quick rapid fire about the films that you guys have done together. So let's see who answers best and who answers them right. So the first question is, name of John and Bipasha's character in Jism. कबीर एंड सोनिया। कबीर। Woo! He got it, Viraj got it. बेटा कबीर याद था क्योंकि वो मेरा डायलॉग था। Well done, Viraj, well done. Okay, Jism एंड इट्स नॉट released- सोनिया, इट्स सोनिया। Sonia, yes, you're Sonia. right. Yeah. सोनिया। Sonia was passe for that film. Sonia. Jism released in which year? 2002। Wrong. Three. Woo! Mona gets it. Mona gets They it. dubbed Well in done. 2002। Okay. Now this dialogue is a part of which film? Okay. कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं राज। गिरी? राज नहीं, राज, ये राज राज? की डायलॉग है। Okay. Yes, it's Raz. I'm so sorry. My bad. Yes, it is Raz. Okay. Name of the characters dubbed in Raz reboot. रेहान। That's yours, Mona. रेहान इज माइन मैंने नहीं एंड डब किया राज रिबूट में। राज रीबूट आई डिड, विक्रम्स फिल्म। ये विकिपीडिया रेहान में है? दुनिया है। रेहान ऑप्शन है? तो दे दो, चार ऑप्शंस दे दो ना, तो चार फिर वो नाम। रैपिड फायर नहीं, ऑप्शंस वाला राउंड थोड़ी ना, ये रैपिड फायर है, Remember यार। एमसीक्यू थोड़ी ना चल रहा है, ये क्या बात हुई? ऑप्शन तो MCQ। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन स्कूलिंग, ये क्या बात हुई? रेहान was mine, I don't remember the I give you get half. Rehan and Shania. Shan, yeah, okay। Okay, now Raz reboot released in 2000 something। Thanks, 2000 something. 2000 something। Sola, Mona, you got it, 2016. Well done. Okay, in Ghulam, what was Rani's character's name? Mona, you have to say this. मतलब गुलाम को 25-26 साल हो गए, पता है? अलीशा। Woo! Well done, well done. Okay, this dialogue is part of which film? पागल वो नहीं होते हैं जिसे भूत दिखते हैं, पागल वो होते हैं जिसे इंसान नहीं दिखते। राज रीबूट नहीं। Well done, Viraj. You Raz guys reboot। are pretty much on the same page. Raz Okay, reboot। last one. Vikram Bhatt has rendered his voice for Aftab Shivdasani in कसूर।
कसूर। सुपर्ब। मेरे पास You एक have the क्वेश्चन sauce, है। sir. हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। विराज ने कोई आ, क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए हैं। हाँ, मेरे पास मेरे नहीं पास है। एक क्वेश्चन है कि विराज और मैंने एक साथ कितनी फिल्में डब की हैं? Ah, ये मैं तो somebody has जवाब to नहीं answer दे this. पाऊंगी। ये आप दोनों को ही जवाब। विराज, यू हैव टू आंसर दिस। विराज, यू आंसर। I don't know. Somebody has to answer this on India Voice Fest. यू हैव टू आंसर। अच्छा, इंडिया मुझे क्या वॉइस मिलेगा? टेस्ट में अटेंडीज को आंसर करने देते हैं, फिर हम टैली कर लेंगे। नाम भी भेजना भाई। सिर्फ नंबर नहीं भेजना, नाम भी भेजना, फिर हम टैली कर लेंगे बाद में। अच्छा, वो यार कौन सी पता नहीं। एक्ट्रेस है, कितनी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी डबिंग मालू और मैं दोनों कर चुके हैं? बिपाशा। आई थिंक या 4-5 हैं। बिपाशा है ना? 4-5 हैं। यू डब फॉर या बिपाशा आल्सो, राइट? बिपाशा, प्रियंका। एंजेलिना, हाँ, प्रियंका, प्रियंका। या यस, प्रियंका, यस, और प्रीति जिंटा, करीना, करिश्मा। नहीं, प्रीति जिंटा you have. I am not aware of नो more. प्रीति जिंटा, नो करीना, नो करिश्मा। आई हैव नॉट ओके, डन। सो देन तीन हुए। एंजेलिना जोली। Yeah, that's a तीन. Priyanka, Angelina, and who was our first one? बिपाशा। Bipasha. बिपाशा। Three. Viraj, we can't ask you the question. Same question. How many films have Answer नहीं we? है। How many films have we done with Vikram? There are विक्रम। quite a few actually. I think कोई 6 or 7 stupid है films. जो कह रहे हैं कि हम 9 फिल्में एक साथ कर चुके हैं विक्रम, विराज, और आदित्य राज कह रहे हैं कि हम 7 फिल्में कर चुके हैं एक साथ। तो ये देखना पड़ेगा। फिल्म का नाम बताओ भाई, तो फिर हमको पता Maybe चले। Shubin is right because he's हाँ, closer to the number in terms of मेरे ख्याल से सुबिन। ज्यादा है। 9 हाँ, नहीं है, ज्यादा ज्यादा है। होंगे शायद। ज्यादा फिल्म। हिंदी ओरिजिनल्स हिंदी ओरिजिनल्स as well as then उतने ही English. होंगे। नहीं, वो छोड़ दो, वो तो मतलब हाँ, अनगिनत तो है। हिंदी ओरिजिनल्स probably हिंदी ओरिजिनल्स जो जाने माने फिल्में हैं, वो कितने होंगे? maybe बट 9. Maybe. ठीक है, आई थिंक इट्स 6:40, मे बी टाइम टू रैप अप नाउ। Yes. मोना शेट्टी है, ईशा ठक्कर बोल रही है, मोना शेट्टी Dubbed एंड विराज हैव approximate डब्ड 10 films. अप्रॉक्सिमेटली 10 Approximately फिल्म। 10 films 10 together. films. Yeah. कोई Wow. नाम बताओ तो जानू। मुझे रोमांस करना मोना ने सिखाया, पता है? हाँ, मैंने सिखाया। मैं डब करता था तब यहाँ आकर बैठती थी। बोलो। कोई चैतन्य बोल रहे हैं कि 12 फिल्म्स। अभी ये नंबर डालने से नहीं चलेगा, नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो नाम हम बता दो, कैसे नाम वेरीफाई बता कैसे करेंगे? बट या This was such थैंक a यू fun विराज, थैंक यू फॉर दैट conversation. एक्नॉलेजमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के मैंने कि रोमांस करना मैंने सिखाया। It's a fact. It will remain that way. Thank you so much for being Thanks, here. It Malavika. was really nice to chat with you both and थैंक Vikram, यू of गाइस, course. इट्स ऑलवेज लवली टू बी इन अ रूम फुल ऑफ फ्रेंड्स। और Yes, हमारे लंचेस और डिनर्स तो चलते रहेंगे, बट चलते दिस ही वाज रहेंगे। अलग अलग किस्म का ये एक मीटिंग जो था, ये मजेदार था। एंड आई लव द व्हाइट कॉन्सेप्ट व्हिच वी गॉट टुगेदर। पता चला सब व्हाइट होने के बाद विक्रम ही व्हाइट नहीं पहन के आया। एंटी क्लाइमैक्स हो गया ये तो। हम At उसको least, बोल at रहे हैं least we हमारे were लिए व्हाइट पहन coordinated. के आए हैं, और वो बोल रहे हैं नहीं, मैं तो पिंक पहना हूँ। Oh God, this was so much fun. Thank you so much for being Thanks, here, both Malavika. of Thank you. you, Mona. थैंक्स What a Thanks. मालू, pleasure this थैंक्स evening विराज। was. Love you guys. Love you टेक too. केयर, Bye. Take See you. care. बाय, See you soon. Bye. बाय।